Indian community in Portugal, around 50,000, one of the most powerful and influential and significant communities in our country, that have contributed so much for the economic development and social development, as well as the smaller Portuguese community in India. These are an example of construction of the future. 400 young people who come from India to study in Portugal. And we hope that many Portuguese youngsters will be learning from India. It's the future that motivates us. We are doing a lot already, but we are even doing more in cultural relations, in art, cinema, in education, in businesses relations, in the openness or opening air routes, and in tourism, and in the defense industry, in the scientific and technological exchange, in AI, in digital sector, in renewable energies. We will be doing much more. We have learned so much from India, and our youth continues to learn from you. But this visit takes place in an international moment that is quite challenging, a moment where multilateralism and the international system based on rules and the respect for sovereignty and territorial integrity, the belief in the increase of common prosperity through free trade, and the need for fighting climate change, all these principles and all these values are undergoing a crisis because they are being put into question by some of those who had been the builders of those principles and values. Presently, and at this moment, our common effort is important to reaffirm the international law, the multilateralism, the Charter of the United Nations, the free trade, and the fair trade, and to maintain the construction of peace, intolerance, and dialogue, and the concern with policies, economic policies, tax policies, and trade policies that should ensure growth and avoid the risk of a recession. The role of India is crucial. It's the largest democracy in the planet. It's an economic power that is huge, with an important role and a multilateral system, as the recent presidency of the G20 has shown. Hence, Portugal has always advocated that India should be in the reform of the UN Security Council, that India should be a permanent member. Hence, the reciprocity in the support for the election of non-permanent members. India supports Portugal, and Portugal supports India throughout the coming years. For all these reasons,
that is going to improve, and to be improved by younger generations. The Indian community in Portugal, strong and powerful, 50,000 people. The Portuguese community in India, the young students coming from India to Portugal and studying here, our cooperation in high-tech, renewables, culture, defense, the way we see the world, a multilateral, open-minded world with free trade, without the temptation of breaking or violating international law or the Charter of United Nations, being India the greatest democracy in the world and a powerful economy, and sharing the values and principles as we share. That's why, Your Excellency, Madam President Droupadi Murmu, dear friend of Portugal, may I call you so? It's an honor having you here in our country to work together for a long-lasting friendship, long-lasting partnership that is more than the knowledge of our people for centuries. It's more than 50 years of diplomatic relations. It's a whole future thinking of our people and thinking of the world. धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोजा, मीडिया के सदस्यगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार व ओम दिया। मुझे पुर्तगाल के महामहिम राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पुर्तगाल आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के दिए गए आदर सत्कार तथा आतिथ्य के लिए मैं राष्ट्रपति रेबेलो डी सोजा और पुर्तगाल गणराज्य की सरकार एवं लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मेरी यात्रा उस वर्ष हो रही है जब हमारे राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरी हो रही है। इस अवसर पर मुझे 2020 के हुई राष्ट्रपति रेबेलो डी सोजा की भारत यात्रा का ध्यान आ रहा है। उनकी यात्रा ने हमारे द्विपक्षीय साझेदारी के विस्तार की दिशा निर्धारित की। देवियों और स्वजनों, भारत पुर्तगाल संबंध ऐतिहासिक है। ये संबंध लगातार मजबूत होते रहे हैं और अब ये एक आधुनिक, बहुआयामी और गतिशील पार्टनरशिप के रूप में विकसित हो रही है। लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं से इन संबंधों को मजबूती मिली है और बढ़ती वाणिज्यिक सहभागिता से ही इन्हें सहयोग मिला है। हमारे रिश्ता आपसी विश्वास, समझ और मुख्य हितों के मुद्दों पर एक दूसरे के समर्थन पर आधारित है। आज सुबह राष्ट्रपति रेबेलो डी सोजा के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई, जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और साझा हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में
अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। हमारे राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरी होने के अवसर पर पुर्तगाल के राष्ट्रपति महोदय के साथ संयुक्त रूप से विशेष पोस्टल स्टाम्प जारी करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस यात्रा के दौरान मैं प्रधानमंत्री मोंटेनेग्रो और संसद के महामहिम अध्यक्षों से भी भेंट करूंगी और लिस्बन सिटी काउंसिल के की हैंडलिंग ओवर सेरेमनी में भी सम्मिलित होंगी। पुर्तगाल स्थित हमारे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलने का भी मैं उत्सुक हूँ। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति रेबेलो डी सोजा को उनके शानदार आतिथ्य के लिए, उनका जो मिलनसार, खुले मन, उनका उदार चेता मानसिकता के लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा पुर्तगाल गणराज्य के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देखी। और सही है, भारत और पुर्तगाल हम पुराना दोस्त है। हम लोगों के बीच अनाविल स्नेह है जिसमें अविलता नहीं है। हम एक दूसरों को हाथ पकड़ के आगे जाने के लिए, विकास के पथ पर आगे जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और सही है, यहाँ 50,000 भारतीय भाई और बहनें अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यरत हैं और ये पुर्तगाल की विकास यात्रा में और सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।